Hello everyone. Hi. Hi, good evening, everyone. Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. So let's start today. Hi for everyone. Hi, I'm Poonam Sharma, your moderator and speaker for the day. Today we are having live session on Super Family Summit. So before I start with the summit and the agenda, let me first introduce myself. I have been a corporate professional for 2 decades and have now evolved myself into a wellness coach. And it had been a very vast experience for the 2 decades of corporate. From the corporate learnings only, I have taken up to a mission that I will be serving the professionals to live and excel and become invincible in both their personal and professional life. And most of my techniques which I use during my counseling and my sessions are based on NLP. So this was me introducing myself. Now let's go ahead and introduce the summit. So all we are aware about is that with the progress of 2030, the United Nations have taken up almost 70 sustainability development goals, out of which one of the goal focuses on mental health and mental upkeep. So इस ग्लोबल एजेंडा को एड्रेस करने के लिए आज हम 4 स्पीकर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं who are not just speakers, they are coaches and counselors and they are excelling in their own fields. So global and world, it sounds so huge and big words, but when we bring it down, we come down to a society. Where we live is a society. But society, what is society? Society is nothing but us. All of us make a society. Society कोई और नहीं बनाता है, बल्कि हम और आप जैसे लोग ही society बनाते हैं. So, as we have all heard it from childhood, charity begins from home. So, nothing but a happy and a healthy family ही एक पॉजिटिव और मजबूत समाज के निर्माण का कारण बन सकता है. So with this agenda, I would like to welcome my all eminent speakers on board today for this Super Family Summit. So let's start with our relationship coach, Pratiksha Purohit, and I would ask her to introduce herself. Pratiksha, please introduce herself for everyone else. Thank you so much, Poonam. Hello everyone. Myself Pratiksha Purohit. I'm a life coach, but especially I'm a life coach for midlife age women. मेरी सफर रही है एक हाउसवाइफ से एक लाइफ कोच की तरफ. दोस्तों, मैंने मिड लाइफ क्राइसिस के चैलेंजेस को बहुत नजदीक से देखा भी है और उसका बहुत अनुभव भी किया है और लाइफ कोचिंग की मदद से मैंने उनको ओवरकम करके मेरी लाइफ को बेहतर बनाया है. तो वैसे ही मैं उन सभी औरतों को जो इस उम्र के इस पड़ाव में आने वाले चैलेंजेस जैसे कि इमोशनल इम्बैलेंस ड्यू टू हार्मोन मेनोपॉज, बच्चों संतान के बड़े हो जाने और इंटीमेसी लैक ऑफ इंटीमेसी की वजह से आने वाला एक खालीपन और इतने सालों के बाद वेयर आई स्टैंड, वो जो एक अस्तित्व की खोज होती है, इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने में और उनकी लाइफ बेहतर बनाने में उन सबकी मदद करना चाहती हूँ और मैंने इसी को अपने जीवन का उद्देश्य भी बना लिया है. थैंक यू. ओवर टू यू पूनम. Thank you so much, Pratiksha, for giving a brief introduction. Now I would like my next speaker to introduce herself. She is a specialist in parent-child relationship. Please welcome Suvidha Singh. Thank you so much, Poonam. Good evening, friends. I am so thrilled to be here amongst all of you. A little about myself. I am first a parent, then an educator, and now a parenting coach. As an educator, I work with children and their emotional ups and downs on a daily basis. As a parent, I understand the challenges and the roller coaster of emotions that come with raising children. And as a parenting coach, it is my mission to work with parents to support them in raising emotionally resilient children. I firmly believe that a loving and supportive environment
can be created at home by adopting open communication and by setting boundaries. And as an educator, I strive to inspire a love for learning in my students. And I also recognize the influence that parents have on their children's lives in their growth and development, and also their belief systems. So I believe that effective parenting is an essential component of a child's educational journey. Thank you. Poonam? So nice to know. So nice to know you, Suvidha. Warm welcome to you. Now let's shift to our next speaker, who is not just a career counselor, he is also a professional navigator for all the students at this age. So let's welcome Vishal Kumar. Thank you, Poonam. Hi, everyone. My name is Vishal Kumar and I'm a career coach. Being an educationalist, मैंने अपना बहुत सारा समय बिताया स्टूडेंट के बीच में, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट को क्या जरूरत है, क्या नहीं है, कहाँ वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। बात करें करियर की, तो करियर में स्टूडेंट ही नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए स्टूडेंट का करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा फ्यूचर सिक्योर हो या ब्राइट हो। मैंने भी अपने इनिशियल डे में बहुत स्ट्रगल किया है, खासकर करियर को लेके। कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ प्रॉब्लम मैंने फेस किया, कुछ गाइडेंस लिया मैंने सीनियर से। समहाउ आई मैनेज टू सेट माय करियर इन राइट पाथ। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब लूप होल है स्टूडेंट के लिए गाइडेंस के तौर पे। सो आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड एज अ मिशन टू हेल्प द स्टूडेंट इन करियर रिलेटेड इश्यूज। थैंक यू। ओवर टू यू, पूनम। Thank you so much. It feels so good to be with all such eminent speakers. So now, without spending more time, I will keep the forum open for all the speakers who may throw an insight about a happy and harmonious family, keeping into consideration their respective field of counseling. So I would like Pratiksha to throw some light upon coordination between a happy family and a harmonious family, and how relationship plays an important role in it. So Pratiksha, what do you think about it? Yes, पूनम, कम्युनिकेशन आपने बोला सच में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, और एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए एक अच्छे कम्युनिकेशन का होना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल ये प्रश्न बहुत आता है, क्वेश्चन मुझे भी पूछा जाता है कि हम लोग कम्युनिकेशन में शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स में और कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ इन छोटी छोटी चीजों का। अगर आप उनको अपनी कम्युनिकेशन में इनकलकेट करेंगे तो आप जरूर से अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना पाएंगे। सबसे पहले आता है एक्टिव लिसनिंग। आप बोलेंगे कि अरे हम तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, हम ध्यान देते हैं, लेकिन एक्चुअली एक्टिव लिसनिंग का मतलब है अनडिवाइडेड अटेंशन। जब आपका कोई फैमिली मेंबर्स आपके पास आता है तो आपको सिर्फ उनको ही सुनना है, ना ही आप मोबाइल देखे या फिर टीवी देखे या कुछ पढ़ते हुए उनको सुने। नहीं, आपको बिना रोके बिना टोके और सिर्फ उनको सुनना है। इससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि सच में आपको उनकी बातों में इंटरेस्ट है और मतलब आप उनके लिए केयर करते हैं। उसके बाद आता है टोन और आई स्टेटमेंट। दोस्तों, टोन जो बहुत ही जरूरी है, हमें अगर हम उनकी बात से सहमत है भी या नहीं भी, लेकिन हमें अपना टोन, अपना स्वर बहुत शांत रखना है। वाकई में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं भी उसकी अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो हमें अपना टोन स्लो रखे और हमें आई स्टेटमेंट में बात करनी है। मेरा मतलब है कि हमें ऐसे बात करनी है कि मुझे ऐसे लगता है, आई फील दैट, मेरा मानना ये है। इससे क्या होगा कि एक तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकेंगे और सामने वाले का मान भी बढ़ा रहेगा, क्योंकि आप उनको ब्लेम नहीं कर रहे हो, उनको टोक नहीं रहे हो, उनको उनके ऊपर कमेंट्स कटाक्ष नहीं कर रहे हो, तो उनको भी अच्छा लगेगा और हो सकता है कि आगे जाके वो भी आपकी बात ध्यान से सुनना शुरू कर दे। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्लैरिफिकेशन, क्योंकि यही एक यहाँ से ही मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि लोग कहना कुछ चाहते हैं और हम समझते कुछ और है। तो पहले आप जो वो बोलते हैं उनको दोहराइए और उनसे कंफर्म कीजिए कि क्या आप यही बताना चाहते थे
क्या आप यही मुझसे कन्वे करना चाहते थे? और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनसे और प्रश्न कीजिए। तो इनसे क्या होगा कि उनको लगेगा कि आप सच में जेन्युइनली उनके लिए कंसर्न करते हैं और आप उसका उनका प्रॉब्लम्स और उनकी समस्या दूर करना चाहते हैं। और सबसे लास्ट, नॉट लास्ट बट द लीस्ट, क्योंकि ये है अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन। दोस्तों, दे आर आवर फैमिली मेंबर्स, दे आर आवर ओन पीपल। तो हमें उनके साथ कोई कंपटीशन में नहीं जाना है, कुछ जीतना नहीं है या कुछ साबित नहीं करना है। तो हमें बीच का कोई मध्यवर्ती रिजोल्यूशन निकालना है जिससे हम दोनों का मान सम्मान बना रहे। और उससे एक चीज और होगी कि सामने वाले व्यक्ति को भी ऐसा लगेगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता है आपके लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज होगी उससे। तो दोस्तों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये एक माहौल बनाता है, एक सिक्योरिटी का, एक समझदारी का और एक एकजुटपन का, जो एक हैप्पी और हार्मोनियस फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो हमें अपने जीवन में इसको रोज बरोज के जीवन में उसको उतारना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे कम्युनिकेशन से एक अच्छे रिश्ते की तरफ, और अच्छे रिश्तों से एक हैप्पी फैमिली की तरफ। शुक्रिया दोस्तों। ओवर टू यू पूनम। Okay. Okay, now I would like Suvidha to please enlighten us with how a parent-child relationship affects a family. Although it's all about parent-child, and when we talk of family, they are the most, the prime people in the part of the family. So, Suvidha, over to you. Thanks, Poonam. So today I want to talk about an essential aspect of parenting. It's the power of trust in a parent-child relationship. And I'm excited to explore this topic with all of you. Trust forms the foundation of a harmonious relationship. If there is trust present in the relationship, that takes the parent-child bond deeper. So what actions can actually break this trust? I want to talk about 3 points specifically. First is lack of consistency. Children, when they are growing up, they need predictability and dependability in their parents' actions and words. And when parents change their expectations or their promises frequently, it creates confusion in the minds of the children. And that undermines the trust that children have on their parents. So consistency plays a vital role in building trust. How can we be consistent? If that's a question, then there's a simple answer to it, that is routines. Routines help us build consistency and build trust in the relationship. Routines could be as simple as eating dinner together at the same time. When you're putting your child to bed, you could have a routine like reading a bedtime story to the child, or tucking the child into the bed, kissing him or her good night, waking up together in the morning, doing exercise together, going cycling, or any activity that you would love to do, and do it together, but do it consistently. Which means that once a child understands that this is my time to go to bed, this is my time for my parents to read a book, this is my time with my mother to give me a bath and put me to bed, then that must be done on a regular, consistent basis. That develops trust in the child. And the second point that I want to talk about is excessive criticism and judgment that harm the self-esteem of the children. So it's important to balance constructive feedback with encouragement and love. When a child says that I did not do well in a test, what is our first reaction? It is that, why didn't you study properly for it?
Why were you on the screen so much when you knew that you had a test? Why aren't you paying attention in class? Why aren't your notes in order? And all of these judgment-based questions puts the child in a spot. He or she may not have answers to these questions. But then what is it that you can do instead of breaking the child's self-esteem and asking these questions? What if you would ask the child, so why do you think you scored so low? What really happened? Wait for the child to answer. You could also say that, do you need help with the topic? Who do you think you can ask for help? It could be the parents, it could be the teachers, it could also be the peers of the child who can offer help. But when you're engaging with a dialogue with your children, it is the child who is doing the thinking, and the child is coming up with the answers. And the child is also building this belief system that my parents trust me to take reliable decisions, right? So, and which is important as the child's upbringing. It's important that the child takes their own decisions and stand by them without breaking the trust in the relationship. The third point that I want to talk about is being a good listener. And I know that Pratiksha also talked about it right now, whether it is between two partners or it is between friends or it is between parent and children. Being a good listener is a very important factor of a relationship. As an educator, I have had parents come to me and talk to me that, why don't you tell our child to do this? Because he listens to you more than he listens to us. He will follow through if you ask our child to do it, because he doesn't listen to us. But have you ever wondered why that is the case? I mean, why is a child ready to trust the teacher and follow through, but is not ready to listen to the parents? I think because teachers believe in the child's emotions, and they create a space for the children to be comfortable with those emotions and then share their feelings, whatever they might be feeling. And if the same kind of space is provided to them at home, and the parents also listen to them, whatever they may have to share, if we are listening to them, we will build a similar kind of trust with our children as parents. So to summarize, to build trust in your child's relationship, one, develop consistency, routines in your everyday life with the children. And no matter what, follow them through. Second is avoid judgment of any sort. And instead, ask the child, how can I help? And thirdly, listen carefully to what your children have to say, and without any sort of judgment. And and those are some steps that can help us build a trustworthy relationship with our children. And now let's listen to Vishal's perspectives on career counseling. Thank you, Suvida. And wonderful. I'm going to talk about the parents and children's relationship in the terms of career. So basically होता क्या है हमारी सोसाइटी में, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा करे तो क्या किया जाता है? नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हमारा रिलेटिव का बेटा क्या कर रहा है, तो सोचते हैं रिलेटिव कोई बेटा अच्छा कर, इस फील्ड में काम करे, जो ये कर रहा है, करियर चुना है, तो उसको सेलेक्ट करते हैं कि तुम ये भी ये कर लो, या फिर बोलते हैं पेरेंट्स की ये सही है तुम्हारे लिए करियर, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं, या फिर देखते हैं कि मेरे फ्रेंड क्या कर रहे हैं, देखते हैं मेरा फ्रेंड ये कर रहा है कि ये करियर चुना है तो मैं भी यही चुन लेता हूँ। इससे क्या होता है, बच्चे कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाते अपने करियर को लेके। नॉर्मली मैं समझाता हूँ इसको, अगर आपको कभी बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, आप किसी मोहल्ले वाले के पास जाते हैं या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं? ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि स्पेशलिस्ट है दवाई का, राइट? लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स एक्चुअली बोलते हैं कि देखो ये कर रहा है तो तुम भी ये कर लो, डायरेक्टली इसको कोचिंग भेज देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे डायरेक्टली कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में क्या है, रेशियो है,
20% ही सक्सेस है, 10 to 20% सक्सेस रेट होता है। अदरवाइज क्या होता है, 80% स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं इस चीज को लेके कि आगे क्या करना है मुझे। अगर मैं कहता हूँ, अगर आप बच्चे को काउंसलिंग करवाते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करवाते हैं कि क्या टैलेंट है उसके अंदर, क्या पोटेंशियल है कि वो आगे कुछ कर सकता है, उसके बाद उस पोटेंशियल को लेके आप उसका कोचिंग करवाइएगा तो ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी देगा बच्चे। अगर लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, सीधा कोचिंग भेज देते हैं, बोलते हैं इस कंपटीशन तैयारी कर लो, उस कंपटीशन तैयारी कर लो, लेकिन बच्चे क्या होते हैं उस चीज को समझ नहीं पाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कोचिंग मत कराइए, ये कोचिंग करवाइए, लेकिन आप काउंसलिंग मत करवाइए, दैट इज टोटली अप टू यू, दैट इज फाइन, राइट। लेकिन एटलीस्ट आप स्टूडेंट के साथ बैठ के, अपने बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि क्या तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा करियर क्या चॉइस है, तुम मुझे बताओ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है पेरेंट्स के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है उस चीज का। अगर बच्चों का इंटरेस्ट और पेरेंट्स का इंटरेस्ट साथ मिल जाए तो इट्स वेरी गुड कि चलो बच्चे का सक्सेस से ज्यादा चांसेस होता है कि हाँ हो जाएगा कुछ अच्छा करियर में उसके। लेकिन अगर बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और है और पेरेंट्स का इंटरेस्ट कहीं कुछ और करवाने का है, तो आप बैठ के डिस्कस कीजिए बच्चों के साथ कि इसमें क्या कौन से प्रॉन्स हो सकता है फ्यूचर में, या इसका क्या फ्यूचर है, इसका है भी नहीं, अच्छा जॉब लगेगा, आगे का क्या सिक्योरिटी है इस चीज को लेके, है ना। तो इस चीज में डिस्कस कीजिए बच्चों के साथ। बच्चे भी अगर रिसर्च करके पेरेंट्स को बताए कि इसमें मुझे इंटरेस्ट है, मुझे इस फील्ड में काम, एक जॉब करना है, एक करियर बनाना है, तो डिस्कस करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इससे क्या होता है, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्कस कीजिएगा तो एक अच्छा रिजल्ट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर अगर फेल भी हो जाए तो एटलीस्ट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन। इससे क्या होगा, आप एक रिस्पॉन्सिबल बनेगा, एक मेच्योरिटी आएगा आपके अंदर। दूसरा, आपका विजन और गोल सेट क्लियर रहेगा कि आपको क्या, आपने करना क्या था, आपने क्या है, ठीक है। तो आप कंपेयर कीजिएगा, इन केस अगर फ्यूचर में फेल होते हैं इन केस, तो क्या होता है कि अगर नॉर्मल स्टूडेंट का क्या है कि वो अभी क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या है, वो जीरो स्टेट में है, लेकिन आप तो +1 पे है क्योंकि आपको आपका क्लियर है कि आपको करना क्या है। तो जब ये फेल होइएगा तो आप 1 से स्टार्ट कीजिएगा, ना कि 0 से। और वो स्टूडेंट क्या है जो अनक्लियर है, वो हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, वो भटकते रहेंगे। इसलिए हमेशा अपना गोल को क्लियर रखिए, पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, काउंसलर से डिस्कस कीजिए और जानिए इस चीज को कि मेरे अंदर पोटेंशियल किस चीज का, किस फील्ड में अच्छा करियर बना सकता हूँ। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा या सोल्यूशन रहेगा, इस तरह से कह सकते हैं कि एक म्यूचुअल डिस्कशन बहुत जरूरी है पेरेंट के साथ, या किसी गाइडेंस, किसी एक्सपर्ट के साथ या काउंसलर के साथ, दैट इज टोटली अप टू यू। सो दिस इज माई व्यू अकॉर्डिंग टू द करियर गाइडेंस। नाउ ओवर टू यू पूनम, व्हाट्स योर व्यू ऑन वर्क लाइफ बैलेंस? Oh, thank you. Thank you so much for giving such a good brief about a career. You know, when you talk about career and we talk about family, so एक ideal picture जो family की होती है, that consists of and concentrates around a husband, wife, child, and parents. And whether both the partners are working or not working, even if they are pursuing career. So what exactly happens is, we as a human being have our own biological clock. So what happens is, जब हम अपनी career start करते हैं तो हमें simultaneously मैरिज का भी प्रेशर रहता है घर पे, घर, सोसाइटी, फ्रॉम एवरीवेयर. So what happens is, at one point of time we are entering into two new lives. One is your new career life and one is your new married life. Fine. फिर जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, when we start to keep a stepping stone for our career, it turns out to be a time when you need to have kids. You have pressure of having kids, be it biological, sociologically, or whatever way. Again, further, when we rise, we try to aim to rise in a middle management level, or to rise ahead in our career. It gets a time that when your kid needs you most, because they are growing up and they become teenager. So that's the time your kid needs most of your attention. And further, if we discuss further, when we try to grow ahead in our career, it becomes time for you to take care of your parents because they have started to age. So this is how we lead our personal life and our work life. It is exactly same as a parallel track of a railway. You know, one way it is a professional life and one way it is a personal life. So when we talk about work life balance is something which everybody wants. You know, everybody thinks of to get it कि काश मेरे पास भी कोई ट्रिक होती, कोई मैजिक होता, so that I could manage a work life balance. But I tell you the truth is that work life balance is simply a mirage.
it's not just it is because when you are in a work life and when you are in a home life, what happens is you tend to obtain and acquire a dual personality, one personality which goes to office and one personality which is there in the house. So because of which we start masking, we start not just masking our face, our reaction, our possibilities, our opportunities, and our behaviors. Most importantly, our behavior and our reaction gets masked both in our work and professional life, right? So when you mask yourself, you actually tend to lose your identity. And if at any point of time you happen to lose your identity, what happens? You become a complex and a negative person. And a complex and a negative person will always create a complex situation in and around, whether it is your work life or whether it's your personal life. So my solution, my suggestion to people who are seeking and looking forward for a work-life balance is uh, try to find out a work where your heart and soul can be put in, where you can put your soul is there, you are happy. Because if you are not happy at one place, you cannot be happy at the second place also. A person who is happy at one place will be the only person who can make and create happiness everywhere and spread happiness everywhere. So a person who is happy at home will carry his happiness to office, and a person who is happy at office, he will carry his happiness to home. So it is basically, it's actually not a balance. I would say it is a cycle. It's a circle basically. So the second point which I would like to suggest to anyone who are looking forward for having a proper work-life balance is, we often hesitate to seek help and take assistance from people in and around us. We often think कि अरे मैं इसे कैसे बोल सकता हूँ मुझे help करने के लिए. So at times what happen when you get stuck in your office work or at home, but then at that time you need to prioritize your office, and when you're stuck at office you need to prioritize your home. So what you can do, the best solution is that ask for help. And whom to ask? The nearest and the easiest resource which God has provided you is your family. Your own family member are the best possible people whom you can ask help for and support for. And in this process of asking support, what you will earn as a bonus is that you will see that how bonded and how connected each and every member in the family becomes to each other. So eventually you, by asking and by taking such small steps, you will be eventually seeing that you have actually created a happy and a harmonious family where there is a proper understanding among each and every member. So as Pratiksha and Suvida also mentioned, if you don't have understanding among each other, there won't be a proper communication. And if there is no proper communication, the relationships will not flourish. And family is nothing just a bunch of relationships. It's a bouquet of relationships. So my suggestion, takeaway for the people would be who are looking for work-life balance is, ask for help. Ask for help for your family member. Include and involve your family members in your work life and home life both, wherever you need their support. So this is all I have to say and guide people about work-life balance. So if anyone has any question or any further queries. Yeah, having queries so much. Yes. Yeah, we should really thank people who have joined our forum, and there are lots of people who are appreciating and joined our forum also. So if anyone in the audience wants to ask any question, have any specific topic which you need to be discussed here, or any feedback. If not, then we will proceed to close this. So Pratiksha, can we proceed to close this? Yeah, sure. Thank you पूनम for ये इतने अहम मसले पे वर्क लाइफ बैलेंस जो आज सबका एक हॉट टॉपिक है, उसके ऊपर इतना अच्छा इंसाइट देने के लिए थैंक यू सो मच. और दर्शकों, व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू. हम चारों स्पीकर विशाल, सुविधा, पूनम और मेरी तरफ से कि आपने अपना ये वैल्यूएबल टाइम दिया और हमारे इस सुपर फैमिली समिट के साथ जुड़े, जहां हम प्रयास करेंगे कि
परिवार से जुड़ी हुई चुनौतियों को हम एड्रेस करने का और हमारी तरफ से उसका सॉल्यूशन देने का, जिससे आप अपनी फैमिली को एक हार्मोनियस फैमिली, हैप्पी फैमिली बना सके। दोस्तों, इसी दिशा में ये सेशन, आज का जो सेशन था वो इस सीजन का पहला एपिसोड था। आगे भी ऐसे कई एपिसोड लेके आएंगे जहां पर हम नए नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा और आप कुछ ना कुछ इसमें से इंसाइट लेके जा रहे हैं, तो प्लीज आप जरूर हमें कमेंट कीजिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए कमेंट करके, या हमें डायरेक्ट मैसेज करके, या हम चारों के बायो में दिए गए गूगल फॉर्म पर जाकर। दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं, आपके मन में कोई विषय है, जैसे आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिए थे उसके अलावा आपके मन में कोई विषय है जो आप चाहते हैं कि हम एड्रेस करें, तो प्लीज वो भी हमें मैसेज कीजिए, ताकि हम अपने आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले फोरम में उस सब्जेक्ट को भी हम, उस टॉपिक को भी हम इनकलकेट कर सके। सो थैंक यू वेरी मच once again. We are here not just to attend a global agenda, it's a household agenda now. So I would invite everyone's suggestion who have joined us ki please give a suggestion, family oriented, any topic you want to know, any discussion, any points, any pain points which you need us to discuss. We will definitely do it in coming ahead episodes of our this Super Family Summit season. जी हाँ, श्योर दोस्तों, तो चलते हैं, मिलते हैं, एक बहुत जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड और एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने फैमिली का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि। गुड नाइट एवरीवन। Thank you Thank so you so much. much. Good night. Thank you. Bye. Bye. Bye.